गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था डबल एंट्री सिस्टम। तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? दैट इट एटलीस्ट अफेक्ट मिनिमम ऑफ टू अकाउंट्स एंड इन opposite directions, out of which one is to be debited and another one is to be credited. So it was the part of our last video. For detailed video you can check the link on description box. Now our new topic is classification of accounts, that can also be called as types of accounts. तो classification of accounts, हमारे accounts कितने types के होते हैं? There are of two types. Number one is personal account and another one is impersonal accounts. तो जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो आगे थ्री टाइप्स के होते हैं. नंबर वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. And impersonal account are of two types, real account and nominal account. So real accounts are also divided in further subdivided into two parts, that are tangible real account and intangible real account. इन्हें डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे. अभी फिलहाल इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. नंबर वन इज पर्सनल अकाउंट. व्हाट आर पर्सनल अकाउंट? Personal account are account of those people's those accounts which relates to individual, firm and any type of institution. जो भी अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल, फर्म या किसी भी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, दैट आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स. इंडिविजुअल मीन्स ह्यूमन बींग्स. Firm are not human beings, but they have separate legal entity such as human beings. हम इसे फर्दर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. We will cover types of personal account here. Number one is natural personal account. What are natural personal accounts? Natural personal accounts are accounts of those human beings such as Mr. Ram, Mr. Shyam, proprietor's capital account and proprietor's joint account. Mr. Ram, human being. Mr. Shyam, human being. So they physically exist. तो जो भी people, जो भी human beings physically exist करते हैं, they are actually persons. Natural, they are covered here. Natural personal account are account of those human beings they who whatever physically exist. Mr. Ram, Mr. Shyam, proprietor's capital account. Proprietor's capital account. Why capital account is natural personal account? Because it is account relating to proprietor. Proprietor is always a human being. Proprietor is a natural personal account. So proprietor's capital account and drawing account are also part of natural personal account. Number two is artificial personal account. What are artificial personal account? As the name says, artificial मतलब जो artificial है, जो persons है but artificial, but they don't physically exist. जो natural personal account की तरह physically exist नहीं करते. They are not human beings but they works as personal accounts. They have separate existence from human beings. They are not humans but they have, as per legal norms, separate legal entity such as firms, clubs, companies and any type of institutions. Banks are also called artificial personal account because they actually don't physically exist. They cover banking companies. So that is also called artificial personal account. Number three is representative personal account. तो representative personal account कौन से होते हैं? These accounts are those accounts which represents a particular person, or group of persons, जो कि या तो एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमने क्या कवर किया था? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ह्यूमन बीइंग्स. Artificial personal account, those are not human beings but they don't physically exist but they have separate legal entity. Now what are representative personal account? Representative means representing the person of group of persons, suppose such as salary outstanding account.
How this is representative personal account? Salary. Salary is always payable to human beings, to employees. Employee is a person or group of persons. So what is salary outstanding account representing? It is representing the amount due to employees, which is group which can be a single person or group of persons. Salary outstanding. Outstanding means amount is due to them, means salary, amount of salary हमें अभी उन्हें पे करनी है. Same in the same way, prepaid insurance account. प्रीपेड, हमने इंश्योरेंस की जो अमाउंट थी उसको हमने प्री पे कर दिया, पहले से ही पे कर दिया. तो दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल. कमीशन अक्रूड अकाउंट. इन द सेम वे, कमीशन अक्रू हुआ है बट अभी रिसीव नहीं हुआ. सो दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल. सो all of these are called representative personal account. So what will the rule will applicable here? जैसा कि हमने कहा, जो हमारा पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उन पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? Our rule will applicable here. Number 1 rule, which is very the most important, debit the receiver, credit the giver. Person is always receiver or giver. जो पर्सन होता है वो या तो कंपनी में ऑलवेज कुछ देगा या कंपनी से, हमारी फर्म से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ लेगा. तो इफ he is the receiver, he is giving something to the firm, to the organization, to the company, then we will debit his account. And in the same way, if he is the giver in the firm, he is giving something to the organization, then he will be credited, his account will be credited. इसे हम एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं. नंबर 1 इज पेड ₹5,000 टू मिस्टर राम. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. वी हैव पेड ₹5,000 पेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? दैट इज कैश अकाउंट. हमारा कैश अकाउंट यहाँ अफेक्ट हो रहा है बिकॉज वी आर पेइंग समथिंग. कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. Number 2 is Mr. Ram account because we are paying amount to Mr. Ram. Whatever we are paying out, paying to something, तो हमारी जो अकाउंट है वो भी वो क्या होगा? अब नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे थे, कैश अकाउंट एंड राम अकाउंट. तो जो कैश अकाउंट है, अब वो यहाँ पर क्या होगा? हमारा कैश क्या जा रहा है? फर्म से बाहर. नंबर 2 इज राम अकाउंट. राम अकाउंट क्या है? राम अकाउंट पहले तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है, उसका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है. तो राम का टाइप ऑफ अकाउंट है पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इन नेचुरल पर्सनल अकाउंट बिकॉज राम फिजिकली एग्जिस्ट, ही इज अ ह्यूमन बीइंग. सो एज पर द रूल, एज पर आवर फर्स्ट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. हियर we are paying ₹5,000, so Ram is receiver, he is receiver. So what we have to do with Ram, we have to debit the receiver. हमें राम को क्या करना है? डेबिट. तो हम यहाँ राम को करेंगे डेबिट. राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश इज आर रियल अकाउंट, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. हमने यहाँ राम को डेबिट किया. कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं. तो आवर एंट्री विल बी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. In the same way, let's take example number 2. We have received ₹5,000. We have received ₹5,000 from Mr. Ram. हमें क्या हुआ? हमें मिस्टर 5,000, सॉरी, वी हैव रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम मैसर्स एबीसी ओवरसीज. हमें मैसर्स एबीसी ओवरसीज से ₹5,000 रिसीव हुए. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं एज पर डबल एंट्री सिस्टम. नंबर 1 इज कैश because we have received cash, and number 2 is Messrs ABC Overseas because we have received cash from Messrs ABC Overseas. And now what is Messrs ABC Overseas? Messrs ABC Overseas is
artificial personal account. This is a firm. All the firms are artificial personal account because they don't physically exist, but they work as person. So as per our rule, debit the receiver, credit the giver. What we have to do here, Mr. ABC overseas is receiving cash, is paying cash to us. So he is the giver, he is the provider of cash. So we have to credit him. And cash is coming to our business. Cash is a real account. रियल अकाउंट के बारे में जैसे कि मैंने भी बताया था, हम अभी पढ़ेंगे. अभी के लिए एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू मैसर्स एबीसी ओवरसीज अकाउंट. सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड. Impersonal account. So our second account is impersonal account. Impersonal accounts are of two types. Number one is real account and number two is nominal account. तो real account पर हमारा यहाँ रूल नंबर 2 एप्लीकेबल होगा. दोस्तों ये रूल्स लर्न करने, समझने, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा जर्नल है वो इन्हीं रूल्स पर बेस्ड है. अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे तो आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे. अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से जर्नल एंट्री सीखो तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स and then rules to be applicable on which type of account must to be clear. They must be clear to your these concepts must be clear to you. So rule number 2 is debit what comes in, credit what goes account. तो जो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं उन पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? Debit what is coming in and credit what is going out. We have to debit those entries, those transactions, what is coming inside the business, and we have to credit that is going out of the business. And what is the rule number 3? हमारा थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट क्या था? नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट पर हमारा कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? और रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. सॉरी, यहाँ क्रेडिट लिखना मिस हो गया. वी हैव टू राइट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. हमें क्या करना है? अपने सभी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करना है और अपने सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है. हम डिटेल में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर रियल अकाउंट्स? Real accounts are accounts of those items, those things whose value can be measured in terms of money and which are properties of the business, or you can say which are belongings of the business, or you can say which are the assets of the business. तो जो भी हमारे फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, बिलोंगिंग होती है, एसेट होती है और जिसकी वैल्यू हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सके, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट. Examples of real accounts are furniture account, stock account, building account, cash account, machinery account, land account, printer account and many more. हम इन सब की वैल्यू को मनी में मेजर कर सकते हैं and they are the property of the business. Furniture is coming inside the business, furniture is going out of the business, that is the property of the business. Stock, building is the property of the business, cash and many more. In the same way, we have already discussed that real accounts are of two types and the rule which is applicable on real account are debit what comes in and credit what goes out. तो जो भी हमारी फर्म में आ रहा है रियल अकाउंट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एसेट ऑफ द बिजनेस, तो जो भी एसेट, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी बिलोंगिंग हमारी फर्म में आ रही है कमिंग इन, दैट शुड बी डेबिटेड. एंड जो भी हमारी फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस से बाहर जा रहा है, दैट मस्ट बी क्रेडिटेड. अगर हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो और अगर हमारे बिजनेस से कुछ जा रहा है तो क्रेडिट कर दो. कितना इजी है ना ये सब. अगर आप इनको ध्यान से समझोगे तो ये सब बहुत इजी है और आपको सिर्फ इनके
रूल्स को देखना है और आपको ये समझना है कि कौन सा अकाउंट किस टाइप का है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमारी ट्रांजेक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं और वो अकाउंट किस टाइप के हैं और उस पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, तो आपके लिए जर्नल एंट्री करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो what are the types of real account? Number 1 is tangible real account and number 2 is intangible real account. Tangible real account. Tangible real account are those accounts that can be touched, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मेजर्ड ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। हमें रियल अकाउंट होते ही वो है जिनकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जिनको हम मनी में मेजर कर सके। तो हम उनको मेजर कर सके, उनको टच कर सके, लाइक फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, गुड्स को हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, फर्नीचर को भी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो दैट ऑल ऑफ दीज आर टेंजिबल रियल अकाउंट। एंड व्हाट आर इनटेंजिबल रियल अकाउंट? इनटेंजिबल जो कि टेंजिबल नहीं है, दैट इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट तो है, दे हैव इट्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो कि प्रॉपर्टी की, जो कि हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी भी है, एसेट भी है, उसकी वैल्यू मनी में मेजर भी की जा सकती है, बट जो कि टेंजिबल रियल अकाउंट नहीं है, दोज आर इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सो रियल इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स कैन नॉट बी टच्ड, उनको हम टच नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इट्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिसकी वैल्यू मनी की फॉर्म में मेजर की जा सके और हम जिसे टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल एंड ट्रेडमार्क। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स टेक एन एग्जांपल। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। हमने मिस्टर राम से क्रेडिट में फर्नीचर परचेज किया, खरीदा। हमने क्या किया, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर फर्नीचर इज real account. Furniture is coming in the business. Furniture is real account. Why furniture is real account? Because it is asset of the business and its value can be measured in terms of money. So it is real account. And number 2, हमारा कौन सा अकाउंट यहाँ अफेक्ट हो रहा है? That is Mr. Ram on credit, because we have taken goods on credit from Mr. Ram. अगर हमने उससे कैश में परचेज किया होता तो हमारे पास हमारा कैश चला जाता, क्योंकि हमने उसे परचेज किया तो हमें उसको कैश पे करना पड़ता। बट बिकॉज हमने यहाँ उससे गुड्स क्रेडिट में परचेज की है, तो हमारा यहाँ पर सेकेंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? मिस्टर राम, बिकॉज वी हैव टू पे amount to him, some amount is due to him, ₹5,000 we have to pay ₹5,000 to Mr. Ram, because we have purchased furniture. Mr. Ram is personal account, as we have already discussed earlier. हमने पहले ही ये बात कर ली है कि मिस्टर राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। एंड फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? Debit what comes in and credit what goes out, and furniture is coming inside the business, so we have to debit the items which are coming inside the business. हमें जो बिजनेस में आ रहा है उसे क्या करना है? हमें उसको डेबिट करना है। सो वी विल डेबिट फर्नीचर हेयर। एंड राम इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो हेयर मिस्टर राम इज गिविंग फर्नीचर टू अस, he is providing furniture to us because we have purchased, so he is seller. If he is selling the product, he is provider of the furniture, so he is the giver. We have to credit the giver, so entry will be furniture account debit to Mr. Ram account ₹5,000. Now let's take another example for this. Sold goods to Mr. Ram for cash for ₹5,000. Here we have sold goods for cash to Mr. Ram. हमने यहाँ क्या किया? मिस्टर राम को कैश में गुड्स सेल की, हमने सेल की। We are the provider. We are the provider. Mr. Ram is the receiver. But because we have sold the goods for cash to Mr. Ram, for cash,
सो हेयर हमारा फर्स्ट अकाउंट हमारा यहाँ कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट, और सेकेंड अकाउंट हमारा कौन सा अफेक्ट हो रहा है, गुड्स अकाउंट, क्योंकि हमने उसको गुड सेल की है तो गुड्स अकाउंट, एंड क्योंकि कैश में सेल की है तो कैश अकाउंट। अगर हम उसको क्रेडिट पर सेल करते तो हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता, मिस्टर राम अकाउंट। तो हमारे कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, cash account and goods account. So because cash is coming in the business, cash is real account, and कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा कैश पर, डेबिट what comes in, and goods are going out of the business, so credit what goes out. Here cash account and goods account both are real account. अगर हम यहाँ कैश की जगह मिस्टर राम को क्रेडिट में गुड्स पे कर रहे, क्रेडिट में सेल कर रहे होते तो यहाँ पर मिस्टर राम अकाउंट होता, और राम अकाउंट क्या होते, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट होते क्यों, बिकॉज राम इज रिसीवर, सो वी विल डेबिट द रिसीवर। हेयर both accounts are real accounts, so our rule will be applicable. Rule number 2, debit what comes in, credit what goes out. Our entry will be cash account debit to goods account. I hope आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा. Now we are going to our third and last account, that is nominal account. What is nominal account? नॉमिनल अकाउंट पर हमारा सबसे पहले हमने देखा कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit all incomes and gains. We have to debit all the expenses. जो भी हमारी फर्म में एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं हमें उसको डेबिट करना है, और जो भी इनकम्स या गेन्स हो रही है हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट। हमें कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर दो, और अगर हम कुछ पे कर रहे हैं हमें कुछ लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। और नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअल, दे आल्सो नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। हम सैलरी को देख नहीं सकते, हम रेंट को देख नहीं सकते, बट दे आर expenses of the business, they are incomes of the business. We can receive the rent, we can receive the commission, so they are coming in the business or they are going out of the business. ये हमारी फर्म के, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इनकम्स एंड गेन्स है, जिनको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम यह नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने कितनी सैलरी पे की, हमें कितना रेंट पे किया, हमें कितना कमीशन मिला या हमने कितना कमीशन पे किया। अगर इन सब का रिकॉर्ड रखना है तो इन सब का रिकॉर्ड रखना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा. Now we are going to our next slide. Let's take an example for nominal account. Paid ₹5,000 for salary. हमने क्या किया, हमने 5,000 रुपीज सैलरी के पे किए. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बिकॉज वी आर पेइंग सैलरीज एंड इन कैश. अगर हमारे नॉमिनल अकाउंट में यह ना दिया हो कि हमने कैश पे किया है, जब अनलेस अंटिल ये ना मेंशन्ड हो कि हमने अभी अमाउंट पे नहीं किया है, अमाउंट ड्यू है या अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो ऑलवेज we have to assume that the entries transaction is made in cash. So हमारे यहाँ कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, सैलरीज एंड कैश. Salary is expense of the organization. It is nominal account. So we have to debit all the expenses as per rule number 3. And in the same way, cash is the property of the business, asset of the business. This is real account. And real account पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 2, and that is credit what goes out, because we are paying cash is going out of the business, so entry will be salaries to cash. Now let's take another example. Received ₹1,000 for commission. We have received ₹1,000 for commission. हमें 1,000 रुपीज का कमीशन रिसीव हुआ. तो कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. तो बिकॉज कैश रिसीव हुआ, इट इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, सो दिस वन इज रियल अकाउंट.
rule will applicable here is debit what comes in, and commission, we have received commission. We have received commission. So commission is income of the organization. Incomes are always nominal account. So we have to apply rule number 3 here, that is credit all incomes and gains. So entry will be cash account debit to commission account. So that's all for the day. Now questions, we can take the questions from here. Number 1 is, what is the rule of recording transactions in nominal account? Question number 2, what is the rule of recording transaction in real account? Number 3, what is the rule of recording transactions in personal account? Number 4, state the types of account. And number 5, what is the meaning of double entry accounting system? So अभी हमने यहाँ पर ये 5 के 5 questions cover कर लिए हैं. Rule of recording transaction in nominal account, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन रियल अकाउंट. तो यहाँ पर हमने अपने अपने जो अभी रूल्स पढ़े हैं उनके बारे में मेंशन करना है. स्टेट द टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. इम्पर्सनल आर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. और डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग भी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में कवर किया था.